Hello students, welcome back to my channel Jai Shri Krishna. So today it's day 7 and we will be continuing with grammar. So today's topic will be verbs. So let's start with the video. What is a verb? Verb क्या होता है? A verb is a word that shows action or state. Verb एक ऐसा word है जो दिखाता है आपका action. Let's suppose she is running. तो running जो वो भाग रही है वो भागना एक एक्शन है, दैट इज अ वर्ब. इफ समवन इज ईटिंग देन ईटिंग इज द एक्शन, दैट इज अ वर्ब. कंसेप्ट क्या है? एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब. हर एक सेंटेंस में एक वर्ब होना मस्ट है, दैट इज अ नेसेसिटी. मस्ट इज अ नेसेसिटी, सो वर्ब होना नेसेसरी है. लेट्स सी द एग्जांपल. शी रन्स, दैट इज अ एक्शन कि वो भाग रही है. ही इज हैप्पी, दैट इज अ स्टेट. So here runs is the action, that is a verb, and happy is the state, that is also a verb. So now let's see the types of verbs we have. First we have main verb. Main verb क्या होता है? जो हमें action show करता है. For example, she writes a letter. उसने एक letter लिखा. दूसरा we have helping verb. Helping verb क्या होते हैं? Support करते हैं जो main verb को. For example, she is writing a letter. वो लेटर लिख रही है. Here is the helping verb and their rights is the main verb. So now let's see the most important rules we have in verbs. Rule number 1, that is subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रूल होता है देखते हैं. जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं तब हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. ही गोज टू स्कूल. ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट and he goes to the school is a singular verb, so he goes will be the right answer. And plural subject takes plural verb. Let's see the example. They go to school. They is the plural subject and go is the plural verb, so they will be the correct answer. Now let's see the rule number 2, that is each and everyone. Each and everyone का basic concept ये होता है, ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं. ये टॉपिक मैंने आपको प्रोनाउन में भी बताया था कि ईच एंड एवरीवन, दीज आर सिंगुलर्स एंड दे ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब ओनली. सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ देम. Everyone are ready. Here everyone is single, then according to rule number 1 they will be continuing with a singular verb only. So everyone is ready will be right. Each student is present will be right. Make sure you will be learning these rules. Now let's see the rule number 3, that is a number of or the number of. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कंसेप्ट क्या है, बेसिकली ये समझते हैं. अ नंबर ऑफ हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं और द नंबर ऑफ हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं. समझाती हूँ आपको कुछ एग्जांपल्स को लेकर. Examples we have a number of students are present. Here a number of students are present. Number of students थे, plural थे, so they are present. The right verb here will be are. Okay. The number of students is high. Here the number of is singular and is will be the singular verb, that will be correct. So now let's see the rule number 4, that is tense consistency. कंसेप्ट समझते हैं. सेम टेंस मस्ट बी यूज्ड इन सेंटेंस. चलो आपको एग्जांपल्स को लेकर समझाती हूँ. ही वेंट टू मार्केट एंड ईट फूड. सेम टेंस मस्ट बी यूज इन द सेम सेंटेंस का मतलब है आप अगर एक जगह पर पास्ट टेंस का यूज कर रहे हो तो दूसरी जगह पर भी आप पास्ट टेंस का ही यूज करोगे. सो राइट आंसर क्या होगा? ही वेंट टू मार्केट and ate food. So if the sentence is going in continuous, then it will be in continuous only. If it is in perfect tense, then it will be in perfect only, and so on. So now let's see the most important rule number 5, that is helping verb. इसका concept क्या होता है कि helping verb show करते हैं tense और उसकी forms को. Examples देखते हैं. She is playing. They are working. यहाँ पे helping verbs क्या है? is and are. So they are showing the tense. Is playing and are working is present continuous tense. So these helping verbs help us to see the tense and the form of the sentence. So now let's see
the MCQ practice questions. Question number 1 we have, that is, each of the players dash responsible for the loss. We have options that are, were, is, have. So according to you, the right answer will be, jaldi se comment karo और right comment को I will gonna pin. So now let's see the second question, that is, a number of students dash absent today. A number of student plural होता है. So options है आपके पास, A option is, B option are, C option was, D option has. So the right answer will be option B, that is R. A number of students are absent today. Now let's see the question number 3, that is, the number of applicants dash increasing every year. The number of applicants. So the options are, option A are, option B were, option C is, option D have. द नंबर ऑफ, खुद ये सिंगुलर होता है तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज. सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज, नीदर ऑफ द टू ऑप्शंस डैश करेक्ट. नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, और मैंने आपको पहले भी बताया है, नाइदर जहां पर भी हम यूज करते हैं वहां पर हम सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी is, option D have. So the right answer will be option number C, that is. Neither of the two options is correct. So now let's see some PYQ type questions. Question number 1, everyone dash their own opinions. Options you having, that is, A have, B has, C had, D having. Everyone is a singular subject, so it will be taking a singular verb, and here the singular verb is option number B, that is has. Everyone has their own opinions. So let's see the question number 2, hardly dash he reached the station when the train left. Let's see the options we are having, that is, option A did, option B had, option C has, option D was. So here the right answer will be option B had. Hardly had he reached the station when the train left. वो स्टेशन पहुंचा ही था और ट्रेन जा चुकी थी. So now let's see the question number 3, scarcely dash she finished her work when she fell asleep. Let's see the options we have. Option A did, option B had, option C has, option D was. So the right answer here will be option B had. Scarcely के साथ हम had का use करते हैं. Scarcely had she finished her work when she fell asleep. And the last question we are having, that is question number 4, one of the students dash selected for the competition. Option A are, option B were, option C is, option D have. So the right answer आप सबके सामने है, that is. One of the students is singular, so it will be taking singular verb only, that is. So this is all for the video. Keep studying and keep learning. See you in the next video. Till then, bye bye.